Welcome from BookmarksEducare. I am Arup Mukherjee, one of the math educator. Today, I will discuss about few questions which are from class 12 ICSE and class 12 for CBSE. So, 7 questions from class 12 ISC and another 7 questions from class 12 for CBSE are discussed for this day. Okay, so now let us start. First question, which is from class 12 ISC section B, question number 1. So first question is, find the point on the curve y is equal to 2x square minus 6x minus 4 at which the tangent is parallel to the x-axis. So to the x-axis means slope of x-axis is 0 because x-axis parallel to x-axis means this. So this line making no angle with x-axis. So no angle means 0. Okay. So tan 0 degree is equal to 0. So slope of x-axis as well as any parallel line to the x-axis is 0. So now if we are given equation of curve, then we can find out the slope of the tangent at any point on the curve. Okay, so first of all you have to derivative the given curve. So from there we can easily able to find out the slope, okay, of the tangent. So the curve is y is equal to 2x square minus 6x minus 4. So differentiating on both sides with respect to x. So dy by dx is equal to 4x minus 6. So this is the slope dy by dx. In calculus, dy by dx is denoted, is considered as slope. Okay, so now any point on the curve, tangent at any point on the curve which is parallel to x-axis. The tangent at any point on the curve which is parallel to x-axis, then the slope of that particular tangent must be 0. So ATQ according to question, dy by dx is equal to 0. So implies that dy by dx means 4x minus 6 is equal to 0. So x is equal to 6 by 4. So 3 by 2. So the measurement of x-axis means x point, x abscissa is 3 by 2. So now this value if I put on the curve equation, put on the curve, then we will be getting the value of ordinate. So y is equal to ordinate, the value of ordinate will be 2 into x का value क्या है 3 by 2 whole square minus 6 into 3 by 2 minus 4. So 2 into 9 by 4, 2 will be eliminated from both numerator and denominator. So यहाँ पर 9 हो जाएगा minus 4. So 9 by 2 minus 13. So 9 minus 26 minus 15 minus 17 by 2. So
we are asked to find out the point at which the tangent must be parallel to the x-axis, and that particular point is situated on the given curve. So the required point is 3/2 comma minus 17/2. Okay, this is the required answer. Clear? So okay, so the next we are going to the next sum. Next sum is which is based on trigonometric inverse. Okay, which is the sum is based on trigonometric function. So trigonometric function chapter से सम belong कर रहा है. So what we have to find out the value of tan inverse x plus cot inverse x. Okay, if tan inverse x whole square minus cot inverse x whole square हो जाएगा ये, ठीक है, whole square is equal to 5π/8. So now we know what we know tan inverse x plus cot inverse x is equal to π/2. This is the formula of inverse trigonometric function. पहले ही मैंने बता दिया ये सम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ही है. So this is the formula of inverse trigonometric function. So now what is given? Tan inverse x whole square minus cot inverse x whole square is equal to 5π/8 is given. Okay, so applying a square minus b square formula, what we will get? Tan inverse x plus cot inverse x मतलब a plus b into a minus b. Tan inverse x minus cot inverse x is equal to 5π/8. So instead of tan inverse x plus cot inverse x, we can put π/2 because this is the formula. So π/2 into tan inverse x minus cot inverse x is equal to 5π/8. So from both sides pi will be eliminated and as well as 2 will be also eliminated, 4. So the required value of tan inverse x minus cot inverse x will be 5/4. Okay, this is the required answer of this expression. Okay, now the next sum number 3. This sum is belonging to the differentiation. Okay, so a derivative का sum है, so proof वाला sum है. So what is given? X to the power y is equal to e to the power x minus y is given. So from there we have to prove that dy by dx is equal to log x by 1 plus log x whole square. So first of all इसका कोई डेरिवेटिव का कोई फॉर्मूला नहीं होता है. अगर वेरिएबल का पावर अगर वेरिएबल होता है तो उसका डेरिवेटिव का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता है. तो वो डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो सब आइदर बेस में जो है वो कांस्टेंट रहेगा और पावर में वेरिएबल रहेगा, और बेस में वेरिएबल रहेगा तो पावर में कांस्टेंट रहना चाहिए. तो
स्पेशल केसेस अगर बेस में वो वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है, तो हम लोग के पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है डेरिवेटिव का, ठीक है। तो इन दिस केस वी हैव टू टेक log on both side to bring down the variable power. ओके, पावर में जो वेरिएबल पावर है, पावर में जो वेरिएबल है उसको नमाना पड़ेगा। तो नमाने के लिए, सामने ले आने के लिए हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, बोथ साइड में log लेना पड़ेगा। ओके, log to the base e. ओके, so taking log to the base e on both side, taking log e, taking log to the base e on both sides. So log x to the power y is equal to log, base में ये है, that is in the understood form. So y into log x is equal to x minus y into log e. So log e, बेस में भी e है, so log e to the base e means 1 होता है, ठीक है। So y into log x is equal to x minus y. So taking y, bring the y from right hand side to the left hand side. So y into log x plus y is equal to x. So taking y as common factor, so y into log x plus 1 हो जाएगा ये, so is equal to x. So now y is equal to x by 1 plus log x. Now differentiating on both sides with respect to x. So dy by dx is equal to, ये u by v फॉर्म में है, ठीक है। सो डिविजन वाला, डिफरेंशिएशन का डिविजन वाला फॉर्म, उसका फॉर्मूला क्या होगा ना, 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1 होता है, माइनस फिर एक्स को कांस्टेंट रख के 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, 1 since 1 constant, that is why the derivative of 1 is 0, and ddx of plus ddx of log x means 1 by x. So 1 plus log x minus x एलिमिनेट हो जाएगा, so 1 भी कट जाएगा, मतलब एलिमिनेट हो जाएगा, so रह जाएगा सिर्फ x. So 1 plus log x whole square, so the log x by 1 plus log x whole square. This we have to prove. Okay, so it is proved. So हम लोगों को मिल गया dy by dx का वैल्यू क्या है ये, so यही हम लोगों को प्रूव करने के लिए बोला गया थे क्वेश्चन में, so प्रूफ हो गया. So the next sum, if f of x is equal to log of 1 plus x plus 1 by 1 plus x, so that f of x attains its maximum value at x is equal to 0. This sum is belonging to the application of derivative chapter. Okay, so application of derivative जो chapter है उसमें maximum minima है, so maximum minimum chapter का ही ये sum है. तो हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू कौन पॉइंट्स में होता है, क्रिटिकल कौन सा क्रिटिकल पॉइंट में होता है, तो वही निकालने के लिए, वही प्रूफ करने के लिए बोला गया है, ठीक है. सो टू फाइंड आउट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एज वेल एज एट विच पॉइंट द फंक्शन विल गिव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू,
सो ये करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शन दिया गया है, मतलब द फंक्शन विच इज गिवन टू अस, we have to first of all derivative that function. Okay, so f of x is equal to log of 1 plus x plus 1 by 1 plus x. So differentiating on both sides with respect to x, so ddx of f of x means f dash x होता है, so is equal to log of 1 plus x, a chain rule होगा, implying chain rule in this figure. So what will you get? ddx of 1 plus log x means log x का डेरिवेटिव क्या है, 1 by 1 plus x हो जाएगा, फिर into 1 plus x का डेरिवेटिव, 1 का तो 0 होता है, प्लस ddx of x means 1, so 1 हो जाएगा, प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1 by ddx of 1 by x का फॉर्मूला क्या है, माइनस 1 by x स्क्वायर, सो एंड 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है, 0 प्लस 1, सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर फॉर एनी वैल्यू of the given function maxima or minima, f dash x must be 0. Okay, this is a condition for being maximum or minimum for function, for the given function. So f dash x का वैल्यू क्या है, 1 by 1 plus x minus 1 by 1 plus x whole square is equal to 0. So 1 plus x whole square, 1 plus x and 1 plus x whole square, इसका LCM क्या होगा, 1 plus x whole square हो जाएगा, so 1 plus x minus 1 is equal to 0, so 1 1 कट जाएगा, so 1 plus x whole square, so for any value of x 1 plus x cannot be 0, okay, and negative, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है, so x is equal to 0, okay. So now to check maximum or minimum for the function, for the given function, we have to derivative further or again. So f double dash ddx of f dash x means f double dash x is equal to, ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 by 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये ddx of 1 प्लस एक्स होल टू द पावर माइनस 2, सो एक्स टू द पावर n का जो फॉर्मूला है वही होगा माइनस 2 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 3, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स होल क्यूब, ओके. So now putting 0 instead of x, हम लोगों को पॉइंट मिल गया, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, एक ही पॉइंट मिला, दैट इज 0. So now we have to check at this point at x is equal to 0 whether the given function is maximum or minimum. So for to check that particular condition, we have to put the value of x in f double dash x. So minus 1 हो जाएगा, plus 2, so 1 greater than 0. So if f double dash x, okay, मतलब if the second order derivative at the given point, at the point at which is obtained, so which is obtained by equating f dash 0 is equal to 0, f dash x is equal to 0. So at that point the second order derivative, if the second order derivative at that point greater than 0, then the function will be minimum. Then the function will be
minimum, and if the point, if double dash x is less than 0 at that particular point, the function will be maximum. उल्टा हो जाएगा. So the given function attain its maximum value, ये गलत है, मिनिमम होगा, क्योंकि if डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव वैल्यू निकल गया है, सो इसीलिए द फंक्शन विल बी मिनिमम. सो we'll be getting minimum value of the function at the point x is equal to 0, not maximum. Okay, minimum. So कॉपी कर लो. ठीक है. So now the next sum, 3 shopkeepers, Gaurav, Rizwan and Jacob, use carry bag made of polythene, handmade paper and newspaper. The number of polythene bags, handmade bags and newspaper bags used by Gaurav, Rizwan and Jacob are this. So usage matrix, let U, okay, let usage matrix U. So U क्या होता है? So the use of bags are written along row wise in the matrix. So first 20, 30, 40, second 30, 40, 20, and third row is 40, 20 and 30. So usage of bags, मतलब utility of bags. So usage of number of bags are written in the matrix along row wise. Okay, row wise. ये रो होता है, ठीक है, रो वाइज. एंड one polythene bag cost rupees 1 handmade. So cost matrix, let cost matrix, एक एक बैग का डिफरेंट एक जो डिफरेंट बैग है उसका एक का कॉस्ट प्राइस क्या है. कॉस्ट मैट्रिक्स denoted by, let the cost matrix be C. Okay, so C is equal to, ये कॉलम मैट्रिक्स होगा. सो जो पॉलिथीन का जो बैग है उसका कॉस्ट 1 है, ठीक है. सो हैंडमेड जो बैग है उसका कॉस्ट 5 है. एंड जो न्यूज़पेपर, the bag which is made of newspaper, cost of that particular bag is 2 rupees. Okay, so now Rizwan, Gaurav, Rizwan and Jacob spent, मतलब expend किया है, ठीक है. So let the expenditure matrix be, let expand the matrix be S, पकड़ लो. So S is equal to A, B, C. Okay, so now
Using the concept of matrix and determinant, answer the following questions. Represent the above information in the matrix form. So expenditure matrix क्या होगा? S into so expenditure matrix S is equal to U into मतलब usage matrix into cost matrix. Okay, so now usage matrix क्या है? 20, 30, 40, 30 वैल्यू बैठा देते हैं इसमें। यू का वैल्यू, यू जो मैट्रिक्स है उसका वैल्यू क्या है? ये है 40, 20, 40, 20 एंड 30। और कॉस्ट मैट्रिक्स क्या है? वो कॉलम मैट्रिक्स है, वो है 1, 5, 2। सो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो देयरफॉर इसका वैल्यू क्या है? ए बी सी। अब मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो दिस इंटू दिस, सो 20 इंटू 1 प्लस 30 इंटू 5 प्लस 40 इंटू 2 हो गया। सेकेंड रो में 30 इंटू 1 मतलब 30 होता है, प्लस 40 इंटू 5 प्लस 20 इंटू 2, ठीक है। एंड थर्ड रो वाला क्या होगा? 40 इंटू 1 मतलब 40 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 30 इंटू 2 हो गया। सो ट्वेंटी प्लस 150 प्लस 80, 30 प्लस 200 प्लस 40, 40 प्लस 100 प्लस 60, so 0, 8 plus 5 13 प्लस 2 15, 1 है तो 250। ओके, 0 हो जाएगा। सो 4 प्लस 0 4 होता है, प्लस 3 मतलब 7 होता है ऑन 2। ओके, सो 0 6 सॉरी 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू रुपीज, एक मतलब गौरव पे कितने एक्सपेंड किए हैं? रुपीज 250। रिजवान कितने एक्सपेंड किए हैं? रुपीज 270। एंड जेकब कितना खर्च किए हैं? जेकब खर्च किए हैं इतना रुपीज, मतलब 200 रुपीज 200। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। Next sum, which is also based on differentiation. So simply differentiation का sum है ये। तो differentiate sin inverse this with respect to x. So let y is equal to sin inverse
2 to the power x plus 1 into 3 to the power x by 1 plus 36 whole to the power x. So simplify कर लेते हैं. First of all, we have to simplify the given expression. So sin inverse from law of indices, what we can write 2 to the power x into 2. So 2 into 2 to the power x into 3 2 to the power x into 3 to the power x मतलब 6 to the power x. Okay, and 1 plus 36 means 6 square whole to the power x. So sin inverse 2 into 6 to the power x by 1 plus 6 we can write 6 to the 6 square whole to the power x means 6 to the power x into 6 to the power x whole square. ये भी लॉ ऑफ इंडिसेस का ही फॉर्मूला है. मतलब a to the power m whole to the power n we can write a to the power n whole to the power m मतलब a to the power m into n. We can write either any one of this figure. Okay, so let 6 to the power x is equal to tan theta. Okay, so sin inverse 2 tan theta, instead of 6 to the power x we must put tan theta. We have to put tan theta. So tan square theta यहाँ पर हो गया. So 2 tan theta by 1 plus tan square theta. This is the formula of multiple angle in trigonometry. So multiple angle का formula मतलब sin 2 theta होता है. ठीक है, sin inverse sin 2 theta. So इसका sin 2 theta का formula ये. So sin inverse of sin 2 theta means 2 theta. ये भी inverse trigonometric फंक्शन का ही फॉर्मूला है. नाउ थीटा का वैल्यू क्या है? थीटा मतलब tan इनवर्स 6 टू द पावर x. ओके, यहां से थीटा मतलब tan इनवर्स 6 टू द पावर x. ओके, सो y इज इक्वल टू, इसका ही सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है. ठीक है, 2 tan इनवर्स 6 to the power x. So now differentiating on both sides with respect to x. So 2 into tan inverse x का, इसको मन ही मन में कैपिटल x पकड़ लेते हैं. So tan inverse x का डिफरेंशिएशन का कोई कौन सा फॉर्मूला होता है? 1 by 1 plus x square. So 1 by 1 plus x मतलब 6 to the power x, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा. फिर यहाँ पर चेन रूल तो अप्लाई करना पड़ेगा ही, क्योंकि x की जगह पे x की जगह पे 6 टू द पावर x है, तो उसका डेरिवेटिव क्या है? a टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x इनटू log a. सो 6 टू द पावर x इनटू log 6. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. सो इसका डेरिवेटिव क्या है? इसका डेरिवेटिव है 6 टू द पावर x इनटू log 6 बाय 1 प्लस. So this is the required answer. So इसका डेरिवेटिव का रिजल्ट, अगर हम उसको डेरिवेटिव करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा ये. ठीक है, now we are going to the next sum, so that this sum is based on also simply derivative. So that this is the solution, general solution of this differential equation. So then how can we prove this? First of all, जो जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है,
क्वेश्चन में उसको डेरिवेटिव करेंगे। सो उसको डेरिवेटिव करने के बाद अगर रिजल्ट आएगा, अगर ये यही रिजल्ट हम लोगों को मिला तो ये हम बोल सकते हैं ये इसका सॉल्यूशन है, वन ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल we have to differentiate the given general solution. Okay, so tan inverse x plus tan inverse y is equal to c. So differentiating on both sides with respect to x, क्या होगा, tan inverse x का डेरिवेटिव करने से क्या होता है, 1 by 1 plus x square हो जाता है, प्लस tan inverse y का डेरिवेटिव करने से क्या होगा, 1 by 1 plus y square, फिर से उसको y का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो y का डेरिवेटिव dy by dx एंड ddx ऑफ c मतलब यहाँ पर कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट है c, सो c का डेरिवेटिव 0 होता है, मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सो नाउ multiplying on both sides by 1 plus x square into 1 plus y square, so क्या होगा, सो ये 1 plus y square हो जाएगा प्लस 1 plus x square हो जाएगा इंटू dy by dx is equal to 0. so 1 plus x square dy by dx is equal to, इसको अगर इस साइड राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 1 plus y square. सो नाउ dx क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सो 1 plus x square into dy is equal to minus 1 plus y square into dx. सो राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो ले आने से क्या हो जाएगा, देखो 1 plus x square dy माइनस, जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा 1 plus y square dx is equal to 0. देखो अब ये वाला आंसर आया कि नहीं आया, देखो हाँ आ गया, ठीक है। सो हम लोग बोल ही सकते हैं इसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन ये होगा। सो प्रूफ हो गया। ओके, सो नाउ 7th sum already we have completed from ISC class 12. okay, from section B. सेक्शन B का जो सातों साम है, कंसेक्यूटिवली जो 7 साम्स है वो हम लोग कर दिया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12 का ही CBSE बोर्ड का सेक्शन B का सातों साम। ओके, नाउ आई एम टेकिंग ब्रेक फॉर few minutes. एक मिनट पॉज दो, ठीक है। हेलो, साउंड और है, साउंड। ओके, द फर्स्ट सम फ्रॉम CBSE फॉर क्लास, सॉरी, फर्स्ट सम फ्रॉम CBSE, ओके है, फर्स्ट सम फॉर CBSE फॉर क्लास 12, that is 10 identical blocks are marked 0 on 2 of them, 1 on 3 of them, 2 on 4 of them, 3. अच्छा, 2 मतलब log 0 है on 2 मतलब 0
ब्लॉक 0 मार्क किया हुआ है, मार्क विथ 0 on 2 blocks, 2 blocks. Okay, so 0 मार्क किया हुआ है ऐसा 2 ब्लॉक है. ओके, सो 1 मार्क किया हुआ है, कितना ब्लॉक है उसमें? 3 of them. Okay, so 3 blocks. एंड 2 मार्क किया हुआ है ऐसा कितना ब्लॉक है? 4 of them, so 4 block. एंड 3 मार्क किया हुआ है ऐसा कितना ब्लॉक है? 1 है. ठीक है, सो सॉरी 1 है. Three on 1 of them. Okay, 7, हाँ 1 है, ये 1 ब्लॉक. ठीक है, कुल मिला के कितना ब्लॉक हुआ? 10 ब्लॉक्स. 3 plus 2 मतलब 5 plus 4 9 plus 1. Now वैल्यू क्या है? 0 1 मतलब नंबर ही वैल्यू होता है यहाँ पर. 2 3. सो 0 पाने का प्रोबेबिलिटी कितना है? तो गेटिंग 0. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 ऑन द ब्लॉक? दैट इज 1 मतलब 2/10. टोटल ब्लॉक क्या है? कितना है? 10 है, और उसमें से 2 ब्लॉक में 0 है. ओके, सो 1 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो गेटिंग द प्रोबेबिलिटी 1, दैट इज 3/10. 2 का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 4/10. एंड 3 का 1/10. ठीक है, सो अब x इंटू पी ऑफ x वैल्यू ये मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 0 इंटू 2/10 तो 0 ही होगा. 1 इंटू 3/10 3/10 ही होगा. 2 इंटू 4/10 मतलब 8/10 होगा. एंड 3 इंटू 1/10 इज इक्वल टू 3/10 होगा. नाउ व्हाट वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ये हुआ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ये टैबुलेशन फॉर्म में जो है with the help of probability and value which are written in the table form, that is known as probability distribution of x. And calculate the mean. Mean means expectation. MEAN, mean is equal to, which is denoted by expectation. Expectation. Okay, so mean means expectation. E of x, that is मीन का फॉर्मूला है सिग्मा x इंटू पी ऑफ x. सो नाउ इसको सम अप कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. ऐड करने से क्या होगा? सो E of x is equal to 0 मतलब 0 हम नहीं लिखते हैं, इसको छोड़ ही देते हैं, तो 0 0 ही होगा. तो 3/10 प्लस 8/10
10 plus 3 by 10, so LCM 10 ही होगा, 6 14, so 1.4, so 1.4 मीन होगा इसका, ठीक है. So now the next sum, in a village of 8,000 people, तो टोटल पीपल क्या है, is equal to 8,000. 3,000 go out of the village to work. So 3,000 go out to work. Person people go out for work. To work 3,000. Okay, and 4,000 are women. Women कितना है, 4,000 women है. And it is noted that 30% of women go out the village to work. So women go out to work, women go out to work 30%, मतलब 3 by 100 into of whose, ना 30% of women, 30% of women go out. So कितना women है, total women 4,000, उसका 30% काम करने के लिए निकल जाते हैं बाहर, ठीक है. So 4,000 1,200. अब what is the probability that a randomly chosen individual is either a woman or a person working outside the village? Okay, so working outside the village. So working outside the village is denoted by, अच्छा, chosen either a woman. Woman is denoted by A. Woman, number of women is denoted by A, and people who go out to work, that is denoted by B. Okay, so either woman or person working outside the village. So now we have to find out P of A union B. So A means either woman or B means person go outside the village. Okay, so now इसका फॉर्मूला P of A union B का फॉर्मूला P of A प्लस P of B, ये वाला प्रोबेबिलिटी का सम है, माइनस P of A इंटरसेक्शन B. सो P of A मतलब P of A मतलब क्या होगा, probability of woman. So 4,000 by 8,000, so that is half. Okay, so ये हाफ हो गया, प्लस probability of the person who go outside to work. Okay, that is P of B, people who go out to the outside to the work, that is 3,000 by 8,000.
So 3 by 8. So 3 by 8. And people who go outside to work must be women. This means intersection. Women होगा एवं and वो बाहर काम करने के लिए जाती है. So उसका so working woman. So working open कितना है? 1200. Okay. So 1200 by 8000. So 20. So now अब एक काम कर देते हैं, 10 से इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40 नहीं 20 से, 20 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा. फॉर द कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशन 5 15 हो जाएगा, 40 ले आते हैं हम लोग डिनोमिनेटर में. ठीक है. माइनस 6 by 40. ठीक है. अब एलसीएम कर देते तो 40 हो जाएगा 20 प्लस 15 माइनस 6. सो 35 minus 6. So 29 by 40. So 29 by 40 is the required answer. The probability that randomly chosen individuals is either a woman or a person working outside the village. Okay, so this is the required answer. Now this sum. So this sum is based on matrix and we are asked to find out the matrix A. So now 3 minus 1 0 1 minus 3, ये 3 by 2 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 by 2. 3 तीनों रो है और 2 कॉलम है इनटू ए. इसको हम एज्यूम करेंगे, लेकिन कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, कौन सी ऑर्डर का ये वाला मैट्रिक्स होगा, वही हमको निकालना पड़ेगा. ठीक है. कैसे दिखाता हूं. ये कॉलम मैट्रिक्स है 2 minus 5 minus 17. सो रो कितना है 3 और कॉलम कितना है 1. सो ए मैट्रिक्स शुड बी 2 by 1. ओके, 2 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा. सो लेट ए मैट्रिक्स, अब ए मैट्रिक्स को पकड़ लेते हैं 2 by 1 ऑर्डर का, तो ए बी, सो वो भी कॉलम मैट्रिक्स ही होगा. ठीक है. नाउ मल्टीप्लाई करेंगे अभी. 3 1 minus 1 0 1 2 minus 3 into a b is equal to 2 minus 5 minus 17. So now मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? 3 into, so 3a minus b, 3a minus b 0 हो जाएगा. सो b 2a minus 3b, this is equals to this. Equating both sides with the values 2 minus 5 minus 17. so b is equal to कितना है? b का वैल्यू -5. 3a minus b is equal to 2 होता है. ठीक है. सो यहां से हम लोगों को a का वैल्यू मिल जाएगा 3a माइनस प्लस हो जाएगा b का वैल्यू
-5 बैठा देते हैं यहाँ पर। सो बैठाने के बाद क्या हो जाएगा, ये होगा। सो 3a इज इक्वल टू -3, सो a इज इक्वल टू -1 हो गया, एंड 2a -3b इज इक्वल टू -17। नाउ LHS 2a -3b, अगर a b बैठने के बाद ये वाला इक्वेशन अगर सेटिस्फाई होगा तो ही जाके बोल सकते हैं ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं करेगा इस इक्वेशन को, ए का वैल्यू जो निकल आया है, बी का वैल्यू जो निकल आया है, वो दोनों वैल्यू अगर बैठाने के बाद इक्वेशन में अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ही हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर करेगा तो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू -1 -3 इंटू बी का वैल्यू -b, सो -2 प्लस 15, सो +13 हो गया। सो यहाँ पर क्या है, RHS में क्या है इक्वेशन का, इस इक्वेशन का RHS में है राइट हैंड साइड में क्या है, -17, so not equal to -17. So what we can say that a does not exist। ऐसा कोई मैट्रिक्स ही नहीं निकल आएगा यहां से, और नहीं मैट्रिक्स होगा ऐसा कोई जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशन के लिए ए वाला मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। सो ए मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट सम, let if subject A maps to B, we define this। so f of x क्या है, f of x is equal to function f of x is x -2 by x -3। so where यहाँ पर a मतलब डोमेन ये होगा, एंड बी रेंज कोडोमेन में r- ये होगा। सो discuss the bijectivity of this function। so first of all, to check the bijectivity of the given function, first of all we prove the function either it is one to one or not। so to check injectivity, first of all 1 to 1, to check 1 to 1, so 1 to 1 मतलब इंजेक्टिविटी। 1 to 1 के लिए क्या होगा, लेट अस एज्यूम x1 and x2 be any two entities or values in set A belongs to R, okay, belongs to set A and A belongs to क्या है, r-1, okay। so now to check the injectivity of the given function, we have to equate f of 1 is equal to f of 2। this is the first condition। so f of 1 x1 -2 by x1 -3 is equal to x2 -2 by x2 -3। so x1 -2 into x2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। so x1 -3 into x2 -2, so x1 x2 minus +6 x1 x2 minus 2x1 minus 3x2 plus 6। so from both side 6 कट जाएगा, x1 x2
ए भी कट जाएगा, सो यहां से अब क्या होगा ना, -3x1 प्लस 2x1 ले आते हैं और यहां से 3 -3x2 प्लस 2x2 मतलब -x1 इज इक्वल टू -x2 मतलब x1 minus x2. So there is no different values of x such that we get the same value of y. So that is why x1 and x2 दोनों डिफरेंट वैल्यू के लिए, मतलब डोमेन में कोई भी कोई भी दो वैल्यू ले लो और उसका अगर रेंज एक ही मिलता है तो 1 to 1 नहीं होगा. सो x1 इज इक्वल टू x2 मतलब दोनों आइडेंटिटी, मतलब दोनों एंटिटी सेम है. सो ये वाला 1 to 1 फंक्शन है. प्रूफ हो गया 1 to 1 वाला फंक्शन. अब ऑन टू चेक करना पड़ेगा. टू चेक ऑन टू, ओके, टू चेक ऑन टू और सब्जेक्टिविटी. टू चेक ऑन टू, ऑन टू के लिए लेट मतलब एफ ऑफ एक्स मतलब हम y लिख सकते हैं. तो y इज इक्वल टू x माइनस 2 बाई x माइनस 3. सो वी हैव टू रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y. सो y इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2 y x minus 3y is equal to x minus 2. So yx minus x is equal to 3y minus 2. So x into x कॉमन ले लेते हैं. So y minus 1 is equal to 3y minus 2. So x is equal to 3y minus 2 by, for y not is equal to 1. अगर 1 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा. सो फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ y, ठीक है, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x we will get real value of y, as well as any real value of y we get real value of x. So every value of range we get its pre-image, मतलब every value of image we get its distinct pre-image. Okay, so this is on to. प्रूफ हो गया. x का कोई रियल वैल्यू के लिए y भी रियल होगा, एज वेल एज y का एक को छोड़ के, 1 को छोड़ के कोई भी रियल वैल्यू ले लो तो y x भी रियल होगा. इसका मतलब y का रेंज में जो वैल्यू है, रेंज जिस वैल्यू के लिए रेंज मिल रहा है, डोमेन का जो वैल्यू के लिए रेंज मिल रहा है वही वैल्यू डोमेन, मतलब यहाँ पर जो जिस वैल्यू के लिए रेंज आ रहा है वही वैल्यू डोमेन में रहेगा. ठीक है, मतलब प्री इमेज मिलेगा हम लोग को. तो यही कंडीशन है ऑन टू होने के लिए. सो ये ऑन टू भी प्रूफ हो गया. सो पहले हम इंजेक्टिविटी प्रूफ कर दिया, मतलब 1 to 1 प्रूफ कर दिया. अभी मैं ऑन टू प्रूफ किया हूं. सो दोनों मिला के दिस फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन. ओके, नाउ द नेक्स्ट सम is based on LPP, linear programming problem. L for linear, P for programming, and last P for problem. So the function z ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर. ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू दिस. ओके, सो सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट तीनों इक्वेशन है, मतलब चारों इक्वेशन है. ए भी ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड इसको स्प्लिट करने से ये हो जाएगा 2 एंड 2 चारों. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी
we have to put this equation on the graph. Okay, so पहले से ये वाला ऑर्डिनेट है, ये एब्सिसा है, so ये एक्स एक्सिस x डैश एंड ये y एक्सिस y डैश, ये ओरिजिन है. So now x plus y is equal to, first of all we have to convert this inequation into equation. So and this equation must be converted into intercept form of straight line. So x by 8 plus y by 8 is equal to 1. So x का मेजरमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला. y का मेजरमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला. सो ऐसे जाएगा, इसका इक्वेशन ऐसा होगा. सो x प्लस y इज इक्वल टू 8. ओके, ये वाला इक्वेशन को, दिस इक्वेशन को प्लॉट कर दिया ग्राफ पेपर में. नाउ सेकेंड इक्वेशन, 3x माइनस 2y is equal to minus x. So x by minus 2 plus y by 3 is equal to 1. So minus 2 1 2 यहाँ पर हो गया, एंड 3 1 2 3 यहाँ से. सो ये वाला ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे. सो ये वाला इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y is equal to minus 6 and x is equal to 0 मतलब ये होगा, ठीक है, y is equal to 0 मतलब ये होगा. सो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसको ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0, इसको ये पकड़ लेते हैं. सो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 8 सॉरी हाँ 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका कोऑर्डिनेट, अच्छा इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट, इसको इसको बी देते हैं, सी इसको डिनोट करते हैं. सी का कोऑर्डिनेट है 0,3. ठीक है. नाउ we have to find out the point, the coordinates of point B. So that is why we have to solve these two simultaneous linear equation. So x plus y is equal to 8 and 3x minus 2y is equal to minus 6. ये equation 1 and equation 2 using method of elimination. So इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. So 2x plus 2y is equal to 16 and 3x minus 2y is equal to minus 6. So 2y पे एलिमिनेट हो जाएगा, तो 5x is equal to 10. So x is equal to 2. कोई भी एक इक्वेशन में बैठा दे, x का वैल्यू 2 यहाँ पर बैठा देते, 2 plus y is equal to 8. So y is equal to 6. So b का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 2,6. ओके. सो दिस अब चेक करना पड़ेगा, सेट द रीजन. ओके, सेट इट रीजन, सेट द फेजिबल रीजन. सो नाउ टू सेट द फेजिबल रीजन, सो graph of this, first graph of this inequation, solution of the graph of this inequation क्या होगा ना, वो सॉल्यूशन मतलब ले आने के लिए, निकालने के लिए हम लोग को 0 0 से चेक करना पड़ेगा, मतलब ओरिजिन से चेक करेंगे. सो ये जो इनिक्वेशन है, इसमें ओरिजिन जो है x और y का वैल्यू दोनों ही 0 होगा, वो बैठाना पड़ेगा. वो बैठाने के बाद अगर इन इक्वेशन को, जो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर, उसको अगर सेटिस्फाई करेगा ओरिजिन का वैल्यू, तो जब जाके सेटल रीजन, ओरिजिन की जो जिस साइड में ओरिजिन है वो लाइन का, उस साइड में सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन सेट होगा. और अगर नहीं सेटिस्फाई करेंगे तो ऑन द अदर साइड विल बी द सॉल्यूशन सेट. ओके, मतलब जिस साइड में ओरिजिन रहेगा ठीक उसका विपरीत दिग में सॉल्यूशन सेट हम लोगों को मिलेगा.
So first of all you have to put origin, मतलब 0 0 0 plus 0, हाँ 0 plus 0 मतलब लेस देन इक्वल 8. सो लेस इक्वल तो नहीं होगा, लेस देन 8 सेटिस्फाई कर रहा है तो ए होगा, मतलब ए. इसका सॉल्यूशन इस साइड में होगा, इस साइड में. ओके ऐसे ऐसे ऐसे. नाउ दिस 0 इधर बैठा दो, 0 होगा, ए भी 0 ग्रेटर देन, हाँ तो ए भी ट्रू है. तो ओरिजिन किस साइड, कौन सा दिख में है, कौन सा साइड में है, ए लाइन का इस साइड में है, तो यहां होगा. एंड x ग्रेटर देन इक्वल 0, सो 0 बैठा दो. हाँ और 0 से अगर कोई ज्यादा वैल्यू लोगे तो भी तो इस साइड होगा एंड y का इस साइड होगा. सो इंटरसेक्शन जोन क्या है, इंटरसेक्शन जोन O A B C O. This is the shaded region and this region is considered as feasible region. Feasible region and these points are feasible point. मतलब B a corner point as well as feasible point. हाँ corner point क्या है B, corner point क्या है C, corner point क्या है origin 0 0 and corner point क्या है A. Okay, that's all. Now the next sum, it is based on differentiation. So differentiate this. So ddx of 5 to the power x by x to the power 5. So applying u by v formula, x to the power 10 हो जाएगा ये, x to the power 5 into 5 to the power x into log 5 minus 5 to the power x into 5 into ddx of x to the power 5 मतलब a 5 into x to the power 4. So x to the power 5 into 5 to the power x into log 5 to the base e minus 5 to the power x plus 1 into x to the power 4 by x to the power 10. This is the required answer. Okay. Next sum, that is also from differentiation. So differentiating on both sides, we have to find out, we are given a particular equation is this, and from there we have to find out dy by dx. So differentiating on both sides with respect to x, so ddx of x square minus 5 कांस्टेंट है इसीलिए बाहर निकल जाएगा, ddx of y cube is equal to ddx of 76 कांस्टेंट है इसलिए उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. सो -4x माइनस 5 इंटू एक्स को रख के u इंटू v का फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का. सो dy by dx प्लस y इंटू ddx ऑफ x मतलब 1, x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर. इसमें चेन रूल इंप्लाई करना पड़ेगा. सो एक्स वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर और y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. सो 4x माइनस 5y माइनस 5x इंटू dy बाई डी एक्स plus 3y square into dy by dx is equal to 0. So this expression can be taken on the right hand side. So minus और यहां से dy by dx कॉमन ले लेते हैं दोनों से. So dy by dx
कॉमन लेने से -5x प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा, दोनों से dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं और इसको इधर ले आते हैं, सो +4x प्लस 5y हो जाएगा। सो dy बाई dx इज इक्वल टू 4x प्लस 5y, घुमा के लिख देते हैं 3y स्क्वायर माइनस 5x। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, so 7th sum has been completed. So now in our next session we will discuss about rest of the sum which are on the question paper, on the both question paper. Okay, so thank you for the day and thank you to all of you for giving us your vital time.